Very good evening to all the participants. Today we will start with Chapter 5, Administration and Distribution of Estate of the Bankrupt. So what it says? (149) Functions of the bankruptcy trustee. So the bankruptcy trustee shall perform the following functions in accordance with the provisions of this chapter. First is, he will see whether there are any affairs of the bankrupt which need investigation. So investigate the affairs of the bankrupt, realize the estate of the bankrupt, and distribute the estate of the bankrupt. So these are the three functions of this bankruptcy trustee. Section 150. Section 150 talks of duties of bankrupt towards bankruptcy trustee. Now, what are the duties of the bankrupt? So these can be correlated with duties of the debtor. So where the duties of the debtor are defined? Duties of the debtor, are they defined anywhere in insolvency? It is there, sir. It is there. What is the section? Text of application. Validity of bankruptcy order. Statement of financial position. Public notice. Registration of claims. Conduct of meeting. सेक्शन 88 है सर. सेक्शन 88 तो इसमें फ्रेश स्टार्ट में होगा ना वो तो. हाँ वो तो फ्रेश स्टार्ट में आ गया. ठीक है. तो इंसॉल्वेंसी में भी कहीं है क्या अलग से? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. No, sir. Insolvency resolution not there. है ना? ऐसा कहीं अलग से नजर नहीं आ रहा. नहीं है सर. Okay. But these are of general nature. Duties of the bankrupt towards bankruptcy trustee. The bankrupt shall assist the bankruptcy trustee in carrying out his functions under this chapter. Achha, he has to give statement of financial position and other things anyway he need to support. Yes, they are there. Anyway, so here the bankrupt shall assist the bankruptcy trustee in carrying out his functions under this chapter by giving the bankruptcy trustee the information of his affairs. Yes. Attending on the bankruptcy trustee at such times as may be required. Giving notice to the bank, because actually here there is a distinction. In case of insolvency, the duties of the resolution professional are different, but here the duties of the bankruptcy trustee are different. Here, the estate lies with the bankruptcy trustee. So the bankruptcy trustee is the trustee of the estate of the bankrupt. But in case of insolvency, it is not so. In case of insolvency, the person who is being adjudged is free to move. So there are not much restrictions during insolvency, but there are lot of restrictions during bankruptcy. Because at that stage, it is not clear whether he will pay or not. But once it is established that either the prepayment plan has failed or he was not able to fully implement it, then bankruptcy order is made against such a person. So the bankrupt shall assist the bankruptcy trustee in carrying out his functions under this chapter by giving to the bankruptcy trustee the information of his affairs, attending on the bankruptcy trustee, giving notice to the bankruptcy trustee of any of the following events which have occurred after the bankruptcy commencement date. Because when at the time of filing of the application, what he did, because the debtor or the creditor both can file the application for bankruptcy. So when the debtor filed the application for bankruptcy, he gave his statement of affairs, and when the creditor filed the bankruptcy application, so in that case, what he did, it was made 129 available. statement of financial position.
Hmm. So He it has was to give statement of financial position. yes. What is the section? 129, sir. 129. So in both cases, the financial position was available to the bankruptcy trustee. But that position was there on the bankruptcy commencement date. Now what will happen of subsequent events? So they are talking here of the subsequent acquisition or devolution or increase in the property of the bankrupt. So if there is acquisition of any property by the bankrupt, if there is any devolution of any property upon the bankrupt, increase in the income of the bankrupt, doing all other things as may be prescribed. So these are the duties. The bankrupt shall give notice of the increase in income or acquisition or devolution of property under clause C of subsection 1 within 7 days of such increase, acquisition or devolution. So whether there is any format, no format is there for notice. Now section 150 subsection 3. Section 150 subsection 3 says that the bankrupt shall continue to discharge the duties under subsection 1 other than the duties under clause C even after the discharge order under section 138. Why? Because the bankruptcy trustee is not discharged. So it says that the bankrupt shall continue to discharge the duties under subsection 1 other than the duties under clause C. It also means that if there is any acquisition of property, if there is any devolution of property, if there is an increase after the issue of discharge order, then that is not covered. For that, the information need not be given. That is the meaning, basically. Because it is presumed that he is an individual or he is a partnership firm. So he must be working somewhere. He must be doing some business. So naturally, nobody can stop him from earning income. So for that increase, for that devolution, he is not required to inform the bankruptcy trustee. But he will perform the duties other than C. That means A and B. Acquisition, devolution. Now, rights of bankruptcy trustee. सर फिर से और- बताइए इसको व्हाट हाँ इज द जी। मीनिंग ऑफ द bankruptcy section continue to discharge the duties under subsection 1 and other duties under subsection and other than duties C. हाँ, देखिए सी Yeah, में क्या है acquisition, बेसिकली devolution. नाउ एज्यूम ए सिचुएशन दैट द डिस्चार्ज ऑर्डर हैज बीन इशूड. ठीक है, अब Okay. डिस्चार्ज ऑर्डर हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बैंकक्रप्ट को डिस्चार्ज ऑर्डर दे दिया. उसके बाद में भी जिंदा तो रहेगा ना, वो काम तो करता रहेगा ना. Right, right. तो वो जो काम कर रहा है उससे जो कमाई कर रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं. Okay. ये मतलब the Okay. bankrupt shall continue to discharge the duties under subsection 1 other than the duties under clause C even after the discharge under section 138. Because even if a discharge order issued, the bankruptcy trustee is not released. Bankruptcy trustee is released by virtue of the order of the adjudicating authority. So there is a separate section. So naturally, there will be difference between the date of discharge order and the date of release of the bankruptcy trustee. So any property devolved upon the Bankrupt after the bankrupt discharge after order. discharge order, he is Yes. free to use it. Yes, definitely. Okay. Now rights of the bankruptcy trustee. भाई ऐसा ना, he is discharged only for certain types of debt, not from all debts. अब जो excluded Right. debt है उससे तो discharge नहीं हो रहा ना फिर भी वो. सर दैट इज फाइन. मेरा ये क्वेश्चन भी था कि व्हाट आर द एसेट्स विल इंक्लूड. एक्सक्लूडेड एसेट हमने छोड़ दिए, उसकी लाइबिलिटीज अभी भी हैं जो जिसको उसने एक्सक्लूडेड डेट्स है, उसके लिए हमें उसको डिस्चार्ज कर उसको ठीक है. अभी पे करना है. हाँ, तो एक उसके कमाएगा बाद पेमेंट करेगा. अच्छा वो बाद में करेगा. और क्या, बाद में कुछ उसका कमाएगा भी तो सही वो. ओके 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 हाँ, तो अगर डेथ हो जाती है उसकी तो लीगल एस्टेट से ले लेंगे जो बचेगा. ओके. Rights of bankruptcy trustee. For the purpose of performing his functions under this chapter, the bankruptcy trustee may by his official name hold property, make contracts, sue and be sued, enter into engagements in respect of the estate, employ persons to assist him. So he can employ persons to assist him. This bankruptcy trustee. Execute any power of, because he might be required to run a business also. Execute any power of attorney, deed or other instrument, and do any other act which is necessary or expedient for the purpose of or in connection with the exercise of his rights. Now 152, general powers of the bankruptcy trustee. So section 151 talks of the rights of the bankruptcy trustee and 152 talks of general powers.
The bankruptcy trustee may, while discharging the functions under this chapter, sell any part of the estate of the bankrupt, give receipts for any money, prove rank, claim, and draw a dividend in respect of such debts due to the bankrupt as are comprised in his estate. Where any property comprised in the estate of the bankrupt is held by any person by way of pledge or hypothecation, exercise the right of redemption in respect of any such property subject to the relevant contract by giving notice to the said person. Where any part of the estate of the bankrupt consists of securities in a company or any other property which is transferable in the books of a person, exercise the right to transfer the property to the same extent as the bankrupt might have exercised if he had not become bankrupt. Because now the bankrupt is incapable of entering into contracts during this period. So who is entering into contracts on behalf of the bankrupt? The bankruptcy trustee. Deal with any property comprised in the estate of the bankrupt to which, because during insolvency he can run his business, but during this bankruptcy, after the bankruptcy order is made, the bankruptcy trustee will do the business on his behalf. He will enter into contracts. Similar to liquidation. Deal with any property comprised in the estate of the bankrupt to which the bankrupt is beneficially entitled in the same manner as he might have dealt with it. Because basically bankrupt is not doing anything here after the bankruptcy commencement date. It is the bankruptcy trustee who is doing. Now 153, similar to section 28, approval of creditors for certain acts. The bankruptcy trustee, for the purposes of this chapter, may, after procuring the approval of the committee of creditors. Now, what is the percentage of approval for this? Probably more than 50. Yes. So normally, if it is not written, so more than 51 is normally considered. In case of CIRP also, they use the word more than 51%. Yeah, unless otherwise determined. हाँ, more than 51 यूज करते हैं ना. कौन सा सेक्शन है वो? 22 है क्या? कोई सेक्शन है इसमें? 21, sir. 21. हाँ, not less than 51% they are using. But So, here more than section 50 only. 21, 7 proviso. 8 के बाद में जो proviso है. Proviso. Provided that where a corporate debtor does not have any financial creditors, the committee of creditors shall be custodial. अच्छा, ये 8 में है. 8 में ऐसा same Otherwise provided in this code, all decisions of the committee of creditors shall be taken by a vote of not less than 51%. तो हम वही 51% यहाँ ले सकते हैं. ठीक है? क्योंकि यहाँ But here more than 50 enough, sir. 50.1 is also enough. ना more than 51 लिखा. देखो जो More than 51. There more than 51, but here आप more than 51 ही लेके चलिए. Otherwise they would have written there more than 51, 50%. More than 51 है. तो more than 51 means more than 51 ही लेना. Not less than 51 है sir. not less than 51, sir. हाँ, Not तो less not less than 51 तो और क्लियर हो गया. इसका मतलब 50.5 भी नहीं हो सकता. Yes. है ना? Yes sir. तो नॉट लेस देन 51 मतलब ताकि क्लियर रहे ना उसमें, क्योंकि परसेंटेज में भी तो आ सकता है ना, डेसिमल्स में भी आ सकता है. तो डेसिमल्स दे वांट टू अवॉइड, वरना राउंडिंग ऑफ वगैरह का चक्कर आएगा. तो इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया नॉट लेस देन 51%. तो सेम परसेंटेज यू कैन टेक केयर. Carry on any business of the bankrupt as far as may be necessary for winding it up beneficially. Bring, institute or defend any legal action or proceedings relating to the property comprised in the estate of the bankrupt. Except as consideration for the sale of any property a sum of money due at a future time subject to certain stipulations such as security. So here he can accept as consideration for the sale of any property a sum of money due at a future time. So they may say that okay, the money will be paid later subject to certain stipulations such as security. Mortgage or pledge any property for the purpose of raising money for the payment, because in property transactions all the money is not paid in one go, but they are saying subject to certain stipulations such as security. Mortgage or pledge any property for the purpose of raising money for the payment of the debts of the bankrupt, something similar to interim finance. Where any right, option or other power forms part of the estate of the bankrupt, make payments or incur liabilities with a view to obtaining for the benefit of the creditors any property which is the subject of such right, option or power.
refer to arbitration or compromise on such terms as may be agreed, any debt subsisting or supposed to subsist between the bankrupt and any person who may have incurred any liability to the bankrupt, make compromise or other arrangement as may be considered expedient with the creditors, make compromise or other arrangements as he may deem expedient with respect to any claim arising out of or incidental to the bankrupt's estate. Okay. Appoint the bankrupt. This is very important. That is why I have highlighted it. So he can appoint the bankrupt itself. In case of CIRP or liquidation, the power doesn't go to the board of directors. But here he can appoint the bankrupt itself because it is an individual's business. So he might be knowing how to run it. So he can appoint the bankrupt to supervise the management of the estate of the bankrupt or any part of it, carry on his business for the benefit of his creditors, assist the bankruptcy trustee in administering the estate of the bankrupt. Okay. Now 154. 154 talks of vesting of the estate of the bankrupt in bankruptcy trustee. So the estate of the bankrupt shall vest in the bankruptcy trustee immediately from the date of his appointment. And the vesting under subsection 1 shall take effect without any conveyance, assignment or transfer. So that order itself will be considered to be that he is having the authority. Now 155. Estate of the bankrupt. The estate of the bankrupt shall include all property belonging to or vested in the bankrupt at the bankruptcy commencement date. The capacity to exercise and to initiate proceedings for exercising all such powers in or over or in respect of property as might have been exercised by the bankrupt for his own benefit at the bankruptcy commencement date or before the date of the discharge order passed under section 138, and all property which by virtue of any of the provisions of this chapter is comprised in the estate. But there are Can you repeat point number B? Point number B is basically the capacity to exercise and to initiate proceedings for exercising all such powers. So he wants to exercise power in respect of a property. So if there is some issue, if there is some legal hazard, so he has the capacity to exercise and to initiate proceedings. Suppose he wants to take charge. Suppose the property is mortgaged and it has to revert back to the bankrupt. So then he will initiate the proceedings for that purpose. Acha, That that is the meaning. property also includes in bank estate. Yes. That means it is some title dispute and Yes, title yes, yes. dispute just like in. Yes. Possession dispute, title Yeah. dispute, anything such. Okay. The estate of the bankrupt. Now, suppose he has given a property on rent and the tenant is not vacating. So he can initiate proceedings. So that will be covered. Okay. Okay. The estate of the bankrupt shall not include an excluded asset. So excluded assets will not be included in the estate of the bankrupt because they will still belong to the bankrupt. And we have already seen the definition of excluded assets. Property held by the bankrupt on trust for any other person. All sums due to any workman or employee from the provident fund, pension fund or gratuity fund, and such assets as may be notified by the central government in consultation with any financial sector regulator. This is something similar to section 36, which is talking of liquidation estate. Now 156. Section 156, delivery of property and documents to bankruptcy trustee. The bankrupt, his banker or agent or any other person having possession of any property, books, papers or other records which bankruptcy trustee is required to take possession for the purpose of the bankruptcy process shall deliver the said property and documents to the bankruptcy trustee. Suppose his banker is having certain documents, certain title deeds or agent or any other person having possession of the property like accountant or somebody. So he shall deliver the said property and documents to the bankruptcy trustee. 157. So it is the duty of such persons. The bankrupt, his agent, banker or agent. So the banker also, if he is having some property paper, so he will hand them over to the bankruptcy trustee. This is the meaning. 157. Acquisition of control by bankruptcy trustee. Now, there is a concept of here possession and control, which is not there in case of insolvency. During CIRP, there is a process of custody and control, but during insolvency of an individual, there is no such process. But here, there is a concept of possession and control.
the bankruptcy trustee shall take possession and control of all property, books, papers, and other records relating to the estate of the bankrupt or affairs of the bankrupt which belong to him or are in his possession or control. Where any part of the estate of the bankrupt consists of things in actionable claims, they shall be deemed to have been assigned to the bankruptcy trustee without any notice of the assignment. 158. This is very important section, 158, which talks of restrictions on disposition of property. In 158, what is important? The important is the date. At what time the property was disposed. So it says any disposition of property made by the debtor during the period between the date of filing of the application for bankruptcy and the bankruptcy commencement date, it shall be void. Because after the bankruptcy commencement date, it is the duty of the bankrupt to hand over all the property and documents to the bankruptcy trustee. But what will be the situation if he disposes of the property after the filing of application, but before this bankruptcy commencement date? So any such transaction will be void. Any disposition of property made under subsection 1 shall not give rise to any right against any person in respect of such property, even if he has received such property before the bankruptcy commencement date in good faith for value without notice of the filing of the application for bankruptcy. So nothing doing, this title will not transfer. This is the meaning. For the purpose of this section, the term property means all the property of the debtor, whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt. So it talks of not only the property comprised in the estate of the bankrupt, but excluded assets also. It says no, whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt, because we have seen certain properties which are not included. Section 155. Section 155 talks of certain properties which are not included in the estate, excluded assets, property held by trust, etc. etc. So, if there is a sale of, say, an excluded asset, so that also will be void. For the purpose of this section, the term property means all the property of the bankrupt. So, this is very important. Whether or not it is comprised in the estate of the bankrupt. Acha, but shall not include property held by the debtor and trust. But naturally, it shall not include property held by the debtor because that doesn't belong to him. Now 159. 159 talks of after acquired property of the bankrupt. The bankruptcy trust, I think when this new Bear Code plus rules plus regulations I've shared with you, you can make your own notes. You can write it here for your own reference if you want to write something. This is all editable. Now 159 talks of after acquired property of the bankrupt. Now in 158, we have discussed the disposition of property between the date of filing and the bankruptcy commencement date. Now, what about the after acquired property? So 159 talks of this. The bankruptcy trustee shall be entitled to claim for the estate of the bankrupt any after acquired property by giving a notice to the bankrupt. A notice under subsection 1 shall not be served in respect of excluded assets, okay, or any property which is required by or devolves upon the bankrupt after a discharge order is passed under section 138. So between the bankruptcy commencement date and the discharge order, any property, if it accrues to the bankrupt, so the bankruptcy trustee will acquire that property. But it will not include any excluded assets. The notice under subsection 2 shall be given within 15 days from the day on which the acquisition or devolution of the after acquired property comes to the knowledge of the bankruptcy trustee. Suppose there was a distant relative of the bankrupt. Now that distant relative was not having any legal heir, and that property devolved upon this bankrupt. Okay? And that property, suppose it's a dwelling house valuing 50 lakhs or 1 crore. So that will not be covered by excluded assets. So such property can be, he is entitled to claim, the bankruptcy trustee. The notice under subsection 2 shall be given within 15 days from the day on which the acquisition or devolution of the after acquired property comes to the knowledge of the bankruptcy trustee. So within 15 days from the day
on which the acquisition or devolution of the after acquired property comes to the knowledge of the bankruptcy trustee. For the purpose of subsection 3, anything which comes to the knowledge of the bankruptcy trustee shall be deemed to have come to the knowledge of the successor of the bankruptcy trustee at the same time, in case of change of trustees. And anything which comes to the knowledge of a person before he is appointed as a bankruptcy trustee shall be deemed to have come to his knowledge on the date of his appointment as bankruptcy trustee. Suppose he had knowledge before appointment also. So the knowledge will be deemed to be from the date of the appointment. The bankruptcy trustee shall not be entitled by virtue of this section to claim from any person who has acquired any right over after acquired property in good faith for value and without notice of the bankruptcy trustee. So there is a difference between section 158 and 159. In that case, this good faith, etc., will not hold good. In case of 158, okay? Disposition between the date of filing and the date of the bankruptcy commencement date. But in 159, if it was but suppose somebody acquired it in good faith for value and without notice, so then the bankruptcy trustee will not be entitled to claim. In that case, the bankrupt must have got some money, so he will be entitled to that money. That is the meaning, basically. Sir, one small clarification, sir. Yes. He has used the words after filing of the application for bankruptcy and bankruptcy commencement date in 158. Yes. But similar words he has not used, but we have to understand this in following that 158. In 159. Yeah, No, 159. 159 clearly is talking of after acquired property. So this is after the bankruptcy commencement date only. Acha. But 158 from the date of filing of the application. And the bankruptcy commencement date. So there are two dates now. One is the date of filing. Second is date of admission. Date of admission is the bankruptcy commencement date. Correct. So the transfer could happen between this period. If it happens during this period, 158 applies. If it happens after this bankruptcy commencement date, then 159 applies. 159. 159 ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी कोई और अक्वायर कर रहा है बैंकरप्ट से। हाँ 159 में हाँ ऐसा वही नहीं है है कि कोई और बैंकरप्ट से अक्वायर कर रहा है, बट 158 में बैंकरप्ट को मिल रही है। नहीं, दोनों ही सिचुएशन है। 159 में इसको मिल भी रही है। 159 में क्या है, 159 में 159(5) जो है वो स्पेसिफिक 159(5) उसी की बात करता है। एक्सेप्शन हो रहा है ना। हाँ 159(5) में बैंकरप्ट के पास प्रॉपर्टी आई और उसने सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ कर दी। यस ओके, ये बात है 159(5) में। लेकिन वो कहता है कि अगर उसने गुड फेथ में एक्वायर की है ना, फॉर कंसिडरेशन की है और उसको नोटिस ऑफ बैंकरप्सी नहीं था, तो फिर उससे वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, फिर उससे क्लेम नहीं कर सकता बैंकरप्सी ट्रस्टी। तो अब वो क्या करेगा बैंकरप्सी ट्रस्टी? नेचुरली वो कहेगा भाई जो तुमने प्रॉपर्टी बेची पैसे तो आए होंगे ना, वो पैसे दो। वो पैसे ले लेगा। ठीक बात हाँ पैसे ले लेगा, मतलब प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर हो गया प्रॉपरली, ये मतलब। 158 में तो टाइटल ही ट्रांसफर नहीं हुआ, वॉइड हो गई वो, चाहे उसने गुड फेथ में ली हो। अच्छा, he has given explanation, sir. For the purpose of this section, the term after acquired property means any property which has been acquired by or has devolved upon the bankrupt after the bankruptcy commencement. Yes, after BCD. 160 क्या है? Onerous property of bankrupt. The bankruptcy trustee may, by giving notice to the bankrupt or any person interested in the onerous property, disclaim any onerous property which forms a part of the estate of the bankrupt. So there could be certain properties which are in the nature of onerous properties. Onerous properties means the property from which the realization may be less, but the obligations are more. The bankruptcy trustee may, so the net result is negative. That is the meaning, basically. The bankruptcy trustee may give the notice under subsection 1. So first, section 160 subsection 1, what it is saying? It is saying that the bankruptcy trustee may, by giving notice to the bankrupt or any person interested in the onerous property. So before disclaiming, he has to give notice to the bankrupt or any person interested in the onerous property. Now, this bankruptcy trustee may give the notice under subsection 1, notwithstanding that he has taken possession of the onerous property
endeavored to sell it or exercised a right of ownership in relation to it. Suppose like we were talking of a property which was under some sort of litigation, and by initiating proceedings, the bankruptcy trustee acquired that property. He tried to sell it, but it was not sellable. है ना? So in that case also, it may be disclaimed as onerous property. A notice of disclaimer under subsection 1 shall determine, as from the date of such a notice, the rights, interests, and liabilities of the bankrupt in respect of the onerous property disclaimed. So this notice of disclaimer itself will determine what will be the rights, interests, and liabilities of the bankrupt in respect of the onerous property disclaimed. Discharge the bankruptcy trustee from all personal liability in respect of the onerous property as from the date of appointment of the bankruptcy trustee. Okay. So he is not personally liable. Acha, here in liquidation, I think he has to apply for AA, but here he can directly issue notice and disclaim the property. नहीं, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या. Oh, आएगा सर, आएगा. उसके बिना कैसे कर लेगा. ए नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर अंडर सबसेक्शन 1. अभी नोटिस की बात कर रहा है, अभी नोटिस दिया, डिस्क्लेम नहीं किया. ए नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर अंडर सबसेक्शन 1 shall not be given in respect of the bid notice is basically the intention to disclaim. Naturally, the approval has to be accorded by the adjudicating authority only. A notice of disclaimer under subsection 1 shall not be given in respect of the property which has been claimed for the estate of the bankrupt under section 155 without the permission of the committee of creditors. bus. So there could be certain property which was acquired without the consent of the creditors. Without the permission of the committee, because if we see the provisions regarding this committee of creditors, approval of creditors, so they say that if you where any right, option, or other power forms part of the estate of the bankrupt, make payments to or incur liabilities with a view to obtaining for the benefit of the creditors any property which is the subject of such right, option, or power, which is given in 153E. So if you have made any payment, but that was made without the consent of the committee of creditors, then you will not be able to disclaim it. That is the meaning. A notice of disclaimer under subsection 1 shall not affect the rights and liabilities of any other person, and any person who sustains a loss or damage in consequence of the operations of a disclaimer under this section shall be deemed to be a creditor of the bankrupt to the extent of the loss or damage. Okay. For the purpose of this section, the term onerous property means any unprofitable contract and any other property comprised in the estate of the bankrupt which is unsaleable or not readily saleable or is such that it may give rise to a claim. मतलब लेने की बजाय देने पड़ जाएंगे. Now notice to disclaim onerous property. ठीक है. No notice of disclaimer under section 160 shall be necessary if a person interested in the onerous property has applied in writing to the bankruptcy trustee or his predecessor, requiring him to decide whether the onerous property should be disclaimed or not. So there is a person who is interested in this onerous property, and he has applied in writing, not orally, but in writing, or his predecessor, requiring him to decide whether the owner's property should be disclaimed or not, and a decision under clause A has not been taken by the bankruptcy trustee within 7 days of the receipt of the notice. Yes. तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो सकता है ये. हाँ, प्रैक्टिकली में देखिए ऐसा ना कि मान लीजिए एक कोई सिनेमा हॉल है, ठीक है. हाँ जी. सिनेमा हॉल में मान लीजिए सिनेमा हॉल की कोई जैसे एग्जीबिशन राइट्स है. अब एग्जीबिशन राइट्स इसके पास है, बट वो पुराने टाइप की फिल्में हैं उसमें, अब उनकी वैल्यू नहीं रही कुछ, ठीक है ना. और वो पुराने पुराने बड़े बड़े बंडल से हैं, है ना. उनको डिस्पोज ऑफ करने का खर्चा ज्यादा आ रहा है, उनको लेने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है ना. तो मान लीजिए कोई अप्लाई करता है, उसका कोई गांव वाला है, वो कहता है भाई मैं इस सिनेमा हॉल को चला लूंगा. तो अगर तो उस केस में क्या है, अगर उसने उससे पूछा है राइटिंग, तो ये डिस्क्लेम नहीं कर सकता.
ये है बेसिकली। ओके ओके ओके। सर एक एग्जांपल, जैसे वी आर इन अ पोर्ट टाउन, तो यहाँ क्या होता है, इंपोर्टेड गुड्स जो आते हैं हाँ। उसकी कस्टम ड्यूटी जो होती है वो टैरिफ के वैल्यूएशन में ज्यादा हो जाती है। हम्म। तो बेसिकली डेटर्स उसको रिजेक्ट कर देते हैं उन गुड्स को, दे डोंट क्लेम इट हाँ बिल्कुल। बिकॉज द ड्यूटी एलिमेंट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। हाँ वैल्यू, हाँ। ऐसे ऐसे गुड्स जो है वो अनक्लेम्ड ही पड़े रहते हैं, बट हाँ स्टिल ओनरशिप तो उसी की रहती है, हाँ। अनलेस अनटिल कि उसका ऑक्शन हो। अब ऑक्शन का गवर्नमेंट का पीरियड 5 इयर्स का होता है, हम्म। कि विद इन 5 इयर्स उनको 3-4 बार नोटिस निकालनी है, ऑक्शन प्रोसेस करनी है। हाँ। तो टिल दैट टाइम द ओनरशिप इज विद द पर्सन, वहां कोई और आके क्लेम कर सकता है। हाँ हाँ। सपोजिंग समबडी कम्स एंड क्लेम्स इट, से कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, देन बैंक्रप्सी Then ट्रस्टी the कैन सेल bankruptcy trustee has to give it to him. वो कहेगा Okay. मैं लेना चाहता हूँ तो पैसे भी तो देगा ना, कुछ ना कुछ। पैसे देगा। यस यस। ऐसा तो है नहीं कि फ्री फंड में लेगा वो। राइट सो राइट वैल्यू भी देगा सर, और फिर वो रिलीज करा के ड्यूटी भी वही पर्सन भरेगा। सो ये बिल्कुल बिल्कुल राइट बिल्कुल। और राइट वहां राइट वहां से वो गुड्स का रिमूवल भी इंश्योर करेगा, ये सब चीजें। अभी तक राइट तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी को क्या लग रहा था कि कॉस्ट ऑफ रिमूवल इज मोर देन द वैल्यू। यस राइट। ये है ना भाई, कबाड़ी वाला भी बोल रहा था भाई मैं तो ले जाने के पैसे लूंगा इसके। या देयर आर सम स्क्रैप्स व्हिच इज अनसेलेबल। ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। एनी ओनर्स प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी डिस्क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ द एस्टेट ऑफ द बैंकरप्ट। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो रहेगी ना। अब एस्टेट से निकलेगी तो वो ओनर्स डिस्क्लेम्ड हो जाएगी, अगर डिस्क्लेम नहीं हुई तो वो पार्ट ऑफ द एस्टेट रहेगी, बस सीधी बात है। For the purpose of this section, an owner's property is said to be disclaimed where notice in relation to that property has been given by the bankruptcy trustee under section 160. Now 162. 162 talks of disclaimer of leaseholds. The bankruptcy trustee may apply to the adjudicating authority for an order under this section in respect of an undervalued transaction between a bankrupt and any person. ठीक है, इसमें क्या है, ये दी बैंक्रप्सी सर ट्रस्ट। लीज लीज और तो छोड़ दिया ना हमने। लीज होल्ड ही तो कर रहे थे, 160 163 जो कर रहे थे, जो इससे ऊपर था। सर वो स्क्रीन स्किप हो गई आपकी। स्क्रीन स्किप हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 162 तो हो गया ना? नहीं 161 नहीं is 162 over, चल रहा है। sir. ठीक है, 162 नहीं हुआ सर। हाँ 162, सॉरी सॉरी, अच्छा वो अंडर वैल्यू पे चल, आप ऑफिसर। उसमें चले गए 162 is 70। disclaimer of leaseholds. The bankruptcy trustee shall not be entitled to disclaim any leasehold interest. भाई लीजहोल्ड की भी वैल्यू रहती है, ठीक है ना। आपने जैसे मैंने बताया एग्जीबिशन राइट्स है, आप ज्यादातर लीज पर लेते हैं, क्योंकि वो तो आप ओनरशिप नहीं रखते ना, उसको यूज करते हैं फिर आगे कर देते हैं। एनी लीजहोल्ड इंटरेस्ट अनलेस ए नोटिस ऑफ द डिस्क्लेमर हैज बीन सर्व्ड ऑन एवरी इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, आपने कोई लीजहोल्ड लैंड ले रखी है, ठीक है ना, somebody is कल्टिवेटिंग दैट लैंड, तो वो दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन दैट लैंड, इस तरह से। तो अगर आपको इफ यू वांट टू डिस्क्लेम एनी लीजहोल्ड इंटरेस्ट, सो यू हैव टू गिव द नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर टू एवरी इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चरल लीज। एग्रीकल्चरल लीज में या फिर माइनिंग लीज होती है या फैक्ट्री लीज होती है, तो उस केस में दोज हु आर वर्किंग ऑन दैट लीज, सो दे आर डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड पर्सन्स, and no application objecting to the disclaimer by the interested person has been filed with respect to the leasehold interest within 14 days of the date on which the notice was served. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू वांट टू डिस्क्लेम द लीज होल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू इशू द नोटिस ऑफ Notice. डिस्क्लेमर टू Disclaimer. एवरी इंटरेस्टेड पर्सन, देन यू हैव टू वेट फॉर Wait 14 14 days. डेज। कि 14 डेज में उसने कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं फाइल किया। ठीक है, नो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिंग टू द डिस्क्लेमर बाय द इंटरेस्टेड पर्सन हैज बीन फाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू द लीजहोल्ड इंटरेस्ट विद इन 14 days of the date on which the notice was served. Where the application objecting to the disclaimer has been filed by the interested person, adjudicating authority has directed under section 163 that the disclaimer shall take effect. अब उसने ऑब्जेक्शन फाइल किया, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डायरेक्शन दे दी कि भाई डिस्क्लेमर शैल टेक इफेक्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी गिव्स ए डायरेक्शन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, इट में ऑल्सो मेक ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फिक्सचर्स, इंप्रूवमेंट्स बाय टेनेंट्स एंड अदर मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द लीज एज इट में थिंक फिट। ठीक है,
कोई सिनेमा हॉल लीज पर चला रहा है, अब उसके पास कोई कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। अब कैन इन्होंने नोटिस ऑफ डिस्क्लेमर दिया बैंक्रप्सी ट्रस्टी ने। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि वो कोई ऑब्जेक्शन ना करे, लेकिन अगर उसने ऑब्जेक्शन किया, बाद में मैटर गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है ना। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बताएगी भाई ये डिस्क्लेमर वेदर इट विल टेक इफेक्ट और नॉट। अब वो कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा जी मैंने तो अपने फिक्सचर्स लगा रखे हैं, इंप्रूवमेंट्स लगा रखी हैं, ठीक है ना। वो कहेगा भाई वो तुम निकाल लो अपनी, एंड अदर मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द लीज एज इट में थिंक फिट। तो ये है मतलब 162 का, ठीक है जी। 163, 163 क्या बोलता है? चैलेंजेस अगेंस्ट डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी। An application challenging the disclaimer may be made by the following persons under this section to the adjudicating authority. ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी डिस्क्लेम कर दी, दो तरह की प्रॉपर्टी इसने बताई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई? पहली तो बताई फ्री होल्ड और दूसरी बताई लीज होल्ड। बेसिकली यही है ना भाई, लीज होल्ड को उसने स्पेसिफिकली डिस्कस किया। यहाँ पर तो वनरस प्रॉपर्टी बता रहा है, ये वनरस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं बता रहा है लीज होल्ड है क्या फ्री होल्ड है ना, कुछ भी हो सकती है ये। और 161 में फिर इसने क्या बताया? 161 में तो नोटिस हो गया, Notice to 162 में हुआ disclaim. डिस्क्लेमर ऑफ लीज होल्ड्स। अब 163 में चैलेंज। अब प्रॉपर्टी डिस्क्लेम हो गई, ठीक है। अब डिस्क्लेम होगा, उसके बाद में चैलेंज कौन कर सकता है? एन एप्लीकेशन चैलेंजिंग द डिस्क्लेम। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्लेमर हैज टेकन इफेक्ट बट नाउ ही वांट्स टू चैलेंज, Someone is challenging. है ना। तो Person is चैलेंज questioning. अगेंस्ट डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी, एन एप्लीकेशन चैलेंजिंग द डिस्क्लेमर मे बी मेड बाय द फॉलोइंग पर्संस अंडर दिस सेक्शन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। पहला, एनी पर्सन हु क्लेम्स एन इंटरेस्ट इन द डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी, और एनी पर्सन हु इज अंडर एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी। भाई आपने क्या है, आपने लीज पर ले रखा है सिनेमा हॉल, और आगे आपके कोई कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर है, उन कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर ने भी सब लीज दे रखी है, ठीक है ना। तो उसका जो सब लेसी है उसके साथ एग्रीमेंट है कि भाई दिस कैंटीन विल गो ऑन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, एंड इफ इट डज नॉट गो तो देन आई विल पे यू फॉर टर्मिनेशन ऑफ द लीज। So then that person will be under any liability in respect of the disclaimed property. So this person may challenge. So this canteen contractor may challenge the disclaimer of the property. ये मतलब है। सर यूजुअली तो सारे डिस्क्लेमर्स चैलेंज ही होंगे, क्योंकि उनका तो राइट्स में उनको पैसा कम ही मिल रहा है। नहीं वो ठीक है, बट ऐसा ना अगर मान लो उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू है ही नहीं या कुछ ही कोई है ही नहीं, तो फिर उस केस में नहीं भी हो सकता। बट प्रोविजन तो सारे लॉ में सारी सिचुएशंस लेनी करने पड़ती है पड़ेंगे, ना। यस यस हाँ, यस। बेसिकली क्या है कि किसी की मैलाफाइड इंटेंशन ना हो, ये है ना इसके पीछे राइट बेसिकली बात ये है कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी पहले डिस्क्लेम कर दे, बाद में अपने ही बंदे को बोल दे उठा लो वहां से। राइट। So any person who claims an interest in the disclaimed property, or any person who is under a liability in respect of the disclaimed property, or where the disclaimed property is a dwelling house, any person who on the date of the application for bankruptcy was in occupation or entitled to occupy that dwelling house. Suppose there is a joint family, and in joint family people are living there, ठीक है ना। So he was in occupation of, suppose there is a tenant, और इज एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई दैट ड्वेलिंग हाउस। मान लीजिए एचयूएफ है, एचयूएफ के नाम प्रॉपर्टी है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना। The adjudicating authority may, on an application under subsection 1, make an order for the vesting of the disclaimed property in or for its delivery to any of the persons mentioned in subsection 1, ठीक है। तो उस केस में कह सकता है कि ये डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी इसको दे दी जाए जिसने चैलेंज किया है। The adjudicating authority shall not make an order in favor of a person who has made an application under clause B of subsection 1, except where it appears to the adjudicating authority that it would be just to do so for the purpose of compensating the person. ठीक है। The effect of an order under this section shall be taken into account while assessing loss or damage sustained by any person in consequence of the disclaimer under subsection 5 of section 160. ठीक है। An order under subsection 2 vesting property in any person need not be completed by any consequence, assignment or transfer. तो order is sufficient. 164, undervalued transaction. The bankruptcy trustee may apply to the adjudicating authority for an order under this section
in respect of an undervalued transaction between a bankrupt and any person. ठीक है, ये undervalued वाले सेक्शन हमने पहले भी देखे हुए हैं, सेक्शन 45 है ना लिक्विडेशन में, तो वैसा ही सेक्शन है। The undervalued transaction referred to in subsection 1 should have been entered into during the period of 2 years ending on the filing of the application for bankruptcy. ठीक है, लुक बैक पीरियड कितना है, 2 years का, and cause the bankruptcy process to be triggered. इसमें एक डीमिंग फिक्शन भी है। क्या डीमिंग फिक्शन है? ए ट्रांजैक्शन बिटवीन ए बैंकरप्ट एंड हिज एसोसिएट entered into during the period of 2 years preceding the date of making of the application for bankruptcy shall be deemed to be an undervalued transaction under this. तो उसमें तो मान ही लिया जाएगा कि ये अंडरवैल्यूड है, ठीक है ना। ऑन दी तो पहले तो हमें देखना है एसोसिएट है या नहीं है। अगर एसोसिएट है तो उसके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो वो अंडरवैल्यूड ही मान ली जाए। और इसके लिए एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द बैंक्रप्सी ट्रस्टी अंडर सबसेक्शन 1 द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पास एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग एन अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन वॉइड, ठीक है। Pass an order requiring any property transferred as a part of an undervalued transaction to be vested with the bankruptcy trustee as a part of the estate of the bankrupt, and pass any other order as it thinks fit for restoring the position to what it would have been if the bankrupt had not entered into that undervalued transaction. The order under clause A of subsection 4 shall not be passed if it is proved by the bankrupt that the transaction was undertaken in the ordinary course of business of the bankrupt, provided that provisions of this subsection shall not be applicable to undervalued transactions entered into between a bankrupt and his associate, ठीक है। अगर bankrupt या associate के बीच में है तो वो फिर normal course of business वाली plea भी नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें तो undervalued मानेंगे ही मानेंगे। For the purpose of this section, a bankrupt enters into an undervalued transaction with any person, वो ये या तो फ्री में दे दे या consideration significantly lower, ठीक है, वही जो सेक्शन 45 में हमने पढ़ा। Makes a gift, no consideration has been received by that person from the bankrupt, it is in consideration of marriage, ठीक है, or it is for a consideration the value of which in money or money's worth is significantly less than the value in money or money's worth of the consideration provided by the bankrupt, ठीक है। bankrupt ने वो प्रॉपर्टी 50 लाख की खरीदी थी, उसने उसको 10 लाख में ट्रांसफर कर दिया, तो ये अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन। सर इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज का मतलब क्या हुआ? अगर बैंकरप्ट ने किसी को मैरिज में गिफ्ट दिया है, हाँ, सपोजिंग उसने अपनी सिस्टर के बेटे का जो देना होता है उसमें उसने कुछ ज्वेलरी गिफ्ट की, तो वापस लेनी पड़ेगी क्या? देखिए, इट इज इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। कंसिडरेशन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज क्या मतलब? कंसिडरेशन ऑफ मैरिज ये अब इसी की मैरिज की बात हो रही है, बैंकरप्ट की। ओके, मतलब ये प्रॉपर्टी देने का कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन मैरिज है, अच्छा, ओके। ये मतलब। सो ही हैज मेड ए गिफ्ट, सर डाउरी हुआ क्या इसका? डॉरी हो गया हाँ, सपोजिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, तो वो वापस लेना पड़ेगा, हाँ हाँ, यही मतलब। प्रोसीडिंग टू। But that is crime, na, sir. No, there are certain rituals which we perform as individual. हाँ। उसकी बात कर रहा था, सब पैसा वापस लेना पड़ेगा। 165 क्या बोलता है? प्रेफरेंस ट्रांजैक्शंस। The bankruptcy trustee may apply to the adjudicating authority for an order under this section if a bankrupt has given a preference to any person. Same 43 है। ठीक है, the transaction giving preference to an associate of the bankrupt under this subsection should have been entered into by the bankrupt with the associate during the period of 2 years ending on the date of the application for bankruptcy. Any transaction giving preference not covered under subsection 2 should have been entered into by the bankrupt during the period of 6 months ending on the date of the application for bankruptcy. तो एसोसिएट के लिए 2 years का पीरियड है, अदर देन एसोसिएट यहाँ पर 6 months का पीरियड है, ठीक है। जैसे वहां 43 में 2 years और 1 year है ना, यहाँ पर 2 years और 6 months. The transaction giving preference under subsection 2 or under subsection 3 should have caused the bankruptcy process to be triggered, ठीक है। On the application of the bankruptcy trustee under subsection 1, the adjudicating authority may pass an order declaring a transaction giving preference void. Pass an order requiring any property transferred to be vested with the bankruptcy trustee.
pass any order as it thinks fit for restoring the position. The adjudicating authority shall not pass an order unless the bankrupt was influenced in his decision of giving preference to a person by a desire to produce in relation to that person an effect under clause B of subsection 8. अब एक बार सेक्शन 8 पे देख लेंगे क्या है. For the purpose of subsection 6, if the person is associate of the bankrupt, otherwise then ये वो इस 43 को रिप्रोड्यूस किया है. 43 में भी है ना, otherwise than by reason only of being his employee. At the time when the preference was given, it simply presumed that the bankrupt was influenced in his decision under that subsection. ठीक है, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दीजिए सर इसको. हाँ हाँ अभी बताते हैं. For the purpose of this section, a bankrupt shall be deemed to have entered into a transaction giving preference to any person if the person is the creditor or surety or guarantor for any debt, and the bankrupt does anything or suffers anything to be done which is the effect of putting that person into a position which in the event of the debtor becoming bankrupt will be better than the position he would have been if that thing had not been done. देखो ऐसा है. Section 43 you all know. Yes, Section sir. 43 is talking of preference transactions. वहां पर where what is the comparison, what is the yardstick? The yardstick is section 53. That if the preference of payment, if the waterfall mechanism is altered because of this transaction, Right. it is not that the amount was not due. Amount was due to this person. Right. Suppose an associate has given a loan, so he is entitled to recover that loan. There is no nothing that. But यहाँ पर क्या है? It will be deemed to be a preferential transaction if it was entered into 2 years prior to this date. And what is the comparison? Comparison says 178 section है ना? यहाँ पर जैसे वहां 53 है ना, 53 से मिलता जुलता सेक्शन है. यहाँ पर 53 से मिलता जुलता सेक्शन है 178 which talks of priority of payment of debt. Right. तो Right. यार्डस्टिक क्या करना पड़ेगा? यार्डस्टिक 178 से कंपेयर करना पड़ेगा कि 178 में चेंज हुआ क्या नहीं हुआ. ऐसा नहीं कि यहाँ ही वाज नॉट एंटाइटल्ड. देखो अंडर वैल्यूड और इसमें फर्क है. अंडर वैल्यूड में तो क्या है, उसको एंटाइटलमेंट ही नहीं थी, उसने वैसे ही दे दी फ्री फंड में या कम पर दे दी. प्रेफरेंस में क्या है, अमाउंट वाज ड्यू. ऐसा नहीं कि अमाउंट वाज नॉट ड्यू, बट ये उसका प्रेफरेंस चेंज कर दिया उसने. तो दिस इज द सेम थिंग एज 43. और ये जो अंडर वैल्यूड है, इट इज द सेम थिंग एज 45. ठीक है जी. ठीक है जी. तो आपको कंपैरिजन कहाँ 178 से करना है. 166 इफेक्ट ऑफ ऑर्डर. सर इसमें, हाँ जी सॉरी, इसमें बोलिए, कोई बोलिए. टाइम, इसमें कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ. जैसे उसमें टाइमिंग दिया हुआ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन को कब रिपोर्ट करना है, कब उसमें करना है. उसमें जैसे 75, 89 कुछ ऐसा टाइम दिया हुआ है. इसमें कोई टाइम ही नहीं नहीं दिया नहीं 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 है. अगर हम CIRP में जाते हैं. अच्छा वो Under- 75 115 130 की बात कर रहे हो आप. या आप 75, 115 और 130 डेज का टाइम दिया हुआ है. यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ है. इसमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेस आपको करते रहना. ठीक. 166 इफेक्ट ऑफ ऑर्डर subject to the provisions of subsection 2, an order passed by the adjudicating authority under section 164 or section 165, ठीक है, shall not give rise to a right against a person interested in the property which was acquired in an undervalued transaction or a transaction giving preference whether or not he is the person with whom the bankrupt entered into such transaction. ठीक है, क्या मतलब हो गया इसका? और सब पहले बी भी पढ़ लेते हैं. Require any person to pay a sum to the bankruptcy trustee in respect of the benefit received from the undervalued transaction or a transaction whether or not he is the person with whom the bankrupt entered into such transaction. बट ये सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 कर लिया, तो सबसेक्शन 2 पहले पढ़ते हैं फिर 1 पढ़े. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply only if the interest was acquired or the benefit was received in good faith for value without notice that the bankrupt entered into transaction at an undervalue or for giving preference. ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपको क्या देखना है, पहले देखना गुड फेथ फॉर वैल्यू विदाउट ये विदाउट नोटिस ऑफ द बैंक्रप्सी है या नहीं है. ठीक है ना. आप बैंकरप्ट ने एक को ट्रांसफर किया, उसने दूसरे को ट्रांसफर कर दिया. ये सेक्शन ये वही है जो वहां प्रेफरेंस ट्रांजैक्शंस में सेक्शन है. वहां पर क्या होता है कि बेसिकली आपने बैंकरप्ट ने
आपको क्या देखना है कि ये ट्रांसफर कहां से होना चाहिए। ट्रांसफर बैंकक्रप्ट से होना चाहिए। किसको होना चाहिए? क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर, इन तीनों को ही हो सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए क्रेडिटर, श्योरिटी और गारंटर को हो गया, उसने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो उस पर ये क्लॉज चलेगी या नहीं चलेगी? अगर गुड फेथ फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस है तो नहीं चलेगी ऑपरेटिव। ठीक है। अगर बैंकक्रप्ट ने ट्रांसफर किया है, चाहे वो गुड फेथ में है, फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस है, तो भी ऑपरेटिव रहेगी। दोनों बातों में फर्क है। ठीक है जी। आपको देखना है कि ट्रांजैक्शन इज बिटवीन द बैंकक्रप्ट एंड ए और ए टू बी। सर नहीं क्लियर हुआ सर। अभी अभी बता देता हूं। विदाउट नोटिस that the bankrupt has filed an application for bankruptcy or a bankruptcy order has been passed, and by any person who at the time of acquiring the interest or receiving the benefit was not an associate of the bankrupt, any sum required to be paid to the bankruptcy trustee shall be included in the estate of the bankrupt. क्या मतलब है? देखिए ऐसा है, जिसको भी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, अब वी आर टॉकिंग ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये तीन लोग हो सकते हैं। एक तो एसोसिएट हो सकता है ना। एक हो सकता है जो क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर हो, और तीसरा इन दोनों के अलावा कोई हो, यही हो सकता है ना। राइट। अगर एसोसिएट है या क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर है, तो उसमें तो ये गुड फेथ, फॉर वैल्यू वगैरह का प्ली नहीं चलेगा। ठीक है। वो ट्रांजेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। राइट। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए ना वो एसोसिएट है, थर्ड पार्टी है। ना वो आपका क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर है, राइट। ठीक है ना, तो उस केस में ये वाला प्ले चलेगा। और उस केस में क्या होगा? जो पैसा देना था उसने, वो इंक्लूड हो जाए। वो प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होगी। राइट। भाई सो प्रॉपर्टी उसने दी तो पैसा लिया होगा ना। सो सपोज 100 रुपीज आना चाहिए था, 80 आया तो 20 और उससे ले लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। एनी 20 सम रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द, 20 20 जो क्योंकि जो बेनिफिशियरी ट्रांजेक्शन की है उससे पैसे भी तो आएंगे ना उसके पास। सर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन किया, 100 रुपए का चीज 80 रुपए में दे दिया। अंडर वैल्यूड अब की बात नहीं हो रही है, ये प्रेफरेंशियल की बात हो रही है। अंडर प्रेफरेंस की वैल्यूड तो वॉइड ही है। वाइड ही है। प्रेफरेंस प्रेफरेंस में उसने प्रेफरेंस दिया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया उसको। ये 164 या 165 की बात कर रहा है। अब 164 में अंडर वैल्यूड है। अब राइट 160, सर। हाँ ठीक है, 164 या 165। अब ये अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन या प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन किसके साथ हो सकती है? या तो एसोसिएट होगा, ठीक है, राइट सर। या क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर होगा, या इनके अलावा कोई होगा, यही हो सकता है ना। जी सर। अब मान लो एसोसिएट के साथ है तो डीम्ड है कि भाई अंडर वैल्यूड है, तो वॉइड हो ही जानी है ये ट्रांजेक्शन। ठीक है। उस केस में या तो वॉइड है ना। हाँ जी, हाँ जी ना, अब थर्ड पार्टी के साथ है थर्ड उसने पार्टी के अंडर। साथ में क्या है? आपने ट्रांसफर कर दी थर्ड पार्टी को, ठीक हाँ है, जी। उससे बैंक ने पैसे कर तो दी। लेने हैं ना आपने। हाँ जी, पैसे लेने हैं, तो कब जो मिले लेने हैं पैसे? वो एस्टेट में आ जाएंगे। ओके, गुड फेथ में किया तो वो स्टेट में आ जाए। हाँ बस बस बस। उतना वो पैसा ही पैसे आ आएगा जाएंगे, जितना वो प्रॉपर्टी नहीं आएगी। प्रॉपर्टी नहीं आए। अगर ओके। वॉइड हो गया तो प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके। ओके। 167, 167 बोलता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6 ऑन एन एप्लीकेशन बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी, the adjudicating authority may make an order under this section in respect of extortionate credit transactions to which the bankrupt is or has been a party. ठीक है। तो on an application by the bankruptcy trustee, the adjudicating authority may make an order in respect of extortionate credit transactions. The transactions under subsection 1 should have been entered into by the bankrupt during the period of 2 years ending on the bankruptcy పెట్టాను చూడమ్మా. commencement. अब यहां पर क्या है? ये जो ट्रांजैक्शन है इसका पीरियड कितना है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years एंडिंग ऑन द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। अब यही पीरियड कहीं कहीं पर हमने देखा कि वो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग दे रहा है ना। बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट तो ऑर्डर हो गया ना। अगर आप दूसरा सेक्शन देखें, From the application of the हाँ, ये from the application date. 65, तो वो क्या बोलता है? एंडिंग ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर क्या बोलता है? बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। ये थोड़ा ध्यान रखना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो कहां पर डेट ऑफ फाइलिंग है और कहां पर बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट से है। ठीक है जी। एन ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी may set aside the whole or any part of any transaction, vary the terms, require any person who has been paid by the bankrupt to pay a sum to the bankruptcy trustee, require any person to surrender to the bankruptcy trustee any property,
Any sum paid on any property surrendered to the bankruptcy trustee shall be included in the estate of the bankrupt. ठीक है. और extortionate credit transaction क्या है? For the purpose of this section, an extortionate credit transaction is a transaction for or involving the provision of credit to the bankrupt by any person on terms requiring the bankrupt to make exorbitant payments in respect of the credit provided. ठीक है. 50% interest, 100% interest, 5% per month interest, etc. or which is unconscionable under the principles of law relating to contracts. Any debt extended by a person regulated for the provision of financial services in compliance with the law in force in relation to such debt shall not be considered as an extortionate credit transaction. Credit card companies, they are charging 36% rate of interest, but they are regulated by a financial sector regulator. So such transactions will not be deemed to be extortionate. बस ठीक है. प्राइवेट मनी लेंडर वाली आ जाएंगी. Now obligations under contracts 168. This section shall apply where a contract has been entered into by the bankrupt with a person before the bankruptcy commencement date. ठीक है. Any party to a contract. अब ये ट्रांजेक्शन हुई कब है? Before bankruptcy commencement date. Before this bankruptcy commencement date. Any party to a contract other than the bankrupt. Suppose the bankrupt was executing a contract. कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था. ठीक है ना. अब उसमें ये भी पार्टनर है. ठीक है ना. उसमें लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, ये 168 की बात कर. तो एनी पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट अदर देन द बैंकरप्ट अंडर सबसेक्शन 1, मान लो उसका कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर है, तो वो अप्लाई कर देगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एन ऑर्डर discharging the obligation of the applicant or the bankrupt under the contract and payment of damages by the party or the bankrupt for non-performance of the contract or otherwise. Any damages payable by the bankrupt by virtue of an order under clause B of subsection 2 shall be provable as bankruptcy debt. ठीक है. अगर मान लीजिए भाई कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था. अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोला भाई ही हैज एंटर्ड इनटू फॉर एक्सिक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट बट नाउ इज इनटू दिस बैंक्रप्सी सो ही कैन नॉट अंडरटेक प्रोजेक्ट्स. है ना. तो मेरे को डैमेजेस दो. तो ये जो डैमेजेस हैं ये दिस शैल बी प्रूवेबल एज बैंक्रप्सी डेट. वो 178 के हिसाब से उसको क्लेम मिल जाएगा. मतलब ये where a bankrupt is a party. तो इसका what he is saying order for discharging the obligation. उसको ये भी बोल सकते, वो बोल सकता है कि इसको ऑर्डर दे दीजिए कि वह मेरा काम करे. हाँ ठीक है. हाँ ओके. बिल्कुल बिल्कुल. और नहीं तो या तो डैमेजेस डैमेजेस दे या काम करे. डैमेजेस देता है तो हाँ. मान लो पेंटर है तो काम कर देगा. कोई परफॉर्मर है, परफॉर्म कर देगा. इस तरह से. पर ऑल दीज सेक्शंस आर नॉट इन सीआईआरपी. उसमें भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं. एनी डैमेजेस पेबल बाय वो तो देखो ऐसा ना, वो आपका सेक्शन जो सेक्शन क्या 65 है, कौन सा है, उसमें तो कुछ भी कह सकता है ना. अपील. सेक्शन 61 एनी मैटर बोलता है ना उसमें. सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन बी इसमें आ जाएगा ना. एनी क्लेम मेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर और कॉर्पोरेट पर्सन इंक्लूडिंग क्लेम्स मेड बाय और अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज, इसके अंदर कवर हो जाएगा ये वाला पॉइंट. 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन बी वैसा ही है ये मोटा मोटा. ओके. Any damages payable by the bankrupt by virtue of an order under clause B of subsection 2 shall be provable as bankruptcy debt. When a bankrupt is a party to the contract under this section jointly with any other person, that person may sue or be sued in respect of the contract without a jointer of the bankrupt. ठीक है. मान लीजिए कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर्स है तो दूसरे आदमी को सू किया जा सकता है. Now this continuance of proceedings on death of the bankrupt. अब अगर डेथ हो जाए तो क्या होगा, तो इफ ए bankrupt dies the bankruptcy proceeding shall continue as if he were alive. ठीक है. तो bankruptcy proceeding कंटिन्यू रहेगी. Now 170 हाँ जी, administration of estate of the bankrupt. All the provisions of chapter 5 relating to the administration and distribution of the estate of the bankrupt shall, so far as the same are applicable, apply to the administration of the estate of a deceased bankrupt. ठीक है. While administering the estate of a deceased bankrupt,
The bankruptcy trustee shall have regard to the claims by the legal representatives of the deceased bankrupt to payment of proper funeral and testamentary expenses. ठीक है, funeral expenses तो आप जानते ही हो, testamentary expenses मान लो उसको कोई शेयर ट्रांसफर कराने हैं, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी है, उसमें जो एक्सपेंसेस हैं उसकी बात. The claims under subsection 2 shall rank equally to the secured creditors in the priority provided under section 178. इसकी priority क्या है? इसकी priority section 178 में secured creditors के साथ. If on the administration of the estate of a deceased bankrupt, any surplus remains in the hands of the bankruptcy trustee after payment in full of all the debts due from the deceased bankrupt, together with the cost of administration and interest as provided under section 178, such surplus shall be paid to the legal representatives of the estate of the deceased bankrupt or dealt with in such manner as may be prescribed. ठीक, अब आप कहोगे भाई सरप्लस कहां से आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा, मान लो प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो गई, पहले नहीं थी उसके पास, बाद में कहीं से प्रॉपर्टी मिल गई उसको, उस सरप्लस आ गया सबको पेमेंट करने के बाद. 171 प्रूफ ऑफ डेट. The bankruptcy trustee shall give notice to each of the creditors to submit proof of debt within 14 days of preparing the list of creditors under section 132. ठीक है, लिस्ट बना ली इसने, लिस्ट के बाद में कहेगा भाई अपने अपने डेट आप प्रूव करो. ठीक है, within 14 days of preparing the list. The proof of debt shall require the creditor to give full particulars of the debt, including the date on which the debt was contracted and the value. Require the creditor to give full particulars of the security, including the date on which the security was given and the value at which that person assesses it, be in such form and manner as may be prescribed. In case the creditor is a decree holder against the bankrupt, a copy of the decree shall be a valid proof of debt. Where a debt bears interest, the interest shall be provable as part of the debt, except insofar as it is owed in respect of any period after the bankruptcy commencement date. ठीक है, the bankruptcy trustee shall estimate the value of any bankruptcy debt which does not have a specific value. The value assigned by the bankruptcy trustee under subsection 5 shall be the amount provable by the concerned creditor. A creditor may prove for a debt where payment would have become due at a date later than the bankruptcy commencement date. ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, where the bankruptcy trustee serves a notice under subsection 1 and the person on whom the notice is served does not file a proof of security within 30 days. ठीक है, ये secured creditor की बात कर रहा हूं. After the date of service, the bankruptcy trustee may, with the leave of the adjudicating authority, तो इसको परमिशन लेनी पड़ेगी adjudicating authority से, he may sell or dispose of any property that was subject to the security free of that security. ठीक है, तो secured creditor को 30 days के अंदर रिवर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज adjudicating authority से परमिशन लेकर के वो बेच सकता है. 172 proof of debt by the secured creditor. क्या बोलते हैं? Where secured creditor realizes his security, he may produce proof of the balance due to him. ठीक है, मतलब आपकी 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसने रियलाइज कर ली, 40 लाख मिल गए, 10 लाख यहां से क्लेम कर लेगा. ठीक है, वेयर सिक्योर्ड क्रेडिटर सरेंडर्स सिक्योरिटी टू द बैंक्रप्सी ट्रस्टी फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स, ही मे प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हिज होल क्लेम. ठीक है, अगर उसने रिलिंक्विश कर दिया तो सारे का क्लेम करेगा. म्यूचुअल क्रेडिट्स एंड सेट ऑफ. ठीक है, तो जो लेना देना है उसकी बात है, कुछ खास नहीं है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड. Whenever the bankruptcy trustee has sufficient funds in his hands, he may declare and distribute interim dividend among the creditors in respect of the bankruptcy debt which they have respectively proved. ठीक, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी टाइम टाइम पर बिकेगी. ठीक है ना, तो जब उसको लगेगा कि भाई सफिशिएंट फंड्स हैं तो ही may declare and distribute interim dividend. Where the bankruptcy trustee has declared any interim dividend, he shall give notice of such dividend and the manner in which it is proposed to be distributed. तो इसका वो नोटिस देगा. In the calculation and distribution of interim dividend, the bankruptcy trustee shall make provision. तो उसमें क्या करेगा? सारा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, थोड़ा सा रख लेगा. किसके लिए रख लेगा? Any bankruptcy debt which appear to him to be due to persons who by reason of the distance of their place of residence may not have had sufficient time to tender and establish their debts. And any bankruptcy debt
which are subject of claims which have not yet been determined, disputed proofs and claims, and expenses necessary for the administration of the estate. तो इन चीजों का प्रोविजन रख के बाकी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते. Now 175. 175 talks of distribution of property. अब कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही, ठीक है ना, तो उसको डिवाइड कर सकता है. The bankruptcy trustee may, with the approval of the committee of creditors, divide in its existing form amongst the creditors according to its estimated value any property in its existing form. ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर्स हैं, कार्स हैं, फ्रॉम फर्नीचर है, फ्रॉम which from its peculiar nature or other special circumstances cannot be readily or advantageously sold. ठीक, इसके लिए अप्रूवल किससे लेनी है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल नहीं है, ध्यान रखिएगा. अप्रूवल किसकी है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. सपोजिंग एक उसका गारंटर का घर है, घर मान उसने लीजिए शोरूम है. हाँ. हाँ, उसने किराए पे दिया हुआ है, तो किराए वाला खाली नहीं कर रहा, वो कहता है पैसा ले लो मेरे से. हाँ, अब पहली बात तो वो क्रेडिटर होना चाहिए. हाँ, वो क्रेडिटर होना चाहिए, उसे भी हाँ. पैसा लेना है उससे, हाँ. क्रेडिटर होना चाहिए. अगर क्रेडिटर क्रेडिटर को नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना ये. हाँ जी, हाँ जी. An approval under subsection 1 shall be sought by the bankruptcy trustee for each transaction. And ये अप्रूवल किससे लेना है? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स. वो क्रेडिटर सर, वो क्रेडिटर, इफ यू आर टेकिंग एन एग्जांपल हाइपोथेटिकली, the showroom person is a creditor because he has given some security deposit with him. हाँ. क्रेडिटर तो होगा वो. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल सही है. राइट. हाँ, तो जो शोरूम का फर्नीचर है उसको दे सकते हैं. हाँ, फर्नीचर नहीं, नहीं, वो शोरूम का क्या था, शोरूम मेरे को बेच दो, तो हाँ. वो खरीद सकते हैं. हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं. हाँ जी. Okay. An approval under subsection 1 shall be sought per approval of committee of creditors. ठीक है, वही not less than 51%. An approval under subsection 1 shall be sought by the bankruptcy trustee for each transaction, and a person dealing with the bankruptcy trustee in good faith and for value shall not be required to inquire whether any approval required under subsection 1 has been given. अच्छा, अब मान लीजिए उसने बिना अप्रूवल के बेच दिया, तो उसको तो पता नहीं ना जिसको बेच रहे हैं. Right. Where the bankruptcy trustee has done anything without the approval of the committee of creditors, the committee may, for the purpose of enabling him to meet his expenses out of the estate of the bankrupt, ratify the act of the bankruptcy trustee. ठीक है, the इसमें तो committee of ratify, creditors. इसमें रेटिफाई हो सकता है, हाँ. सीआईआरपी में रेटिफाई नहीं हो सकता, वो एक्शन ही वाइड हो जाए. हाँ. The committee of creditors shall not ratify the act of the bankruptcy trustee under subsection 3 unless it is satisfied that the bankruptcy trustee acted in case of urgency and has sought its ratification without undue delay. ठीक है, ये भी कंडीशन है. तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी हो सकता है इसमें, लेकिन उसमें उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इट वाज अर्जेंट, इस तरह से. नाउ 176 टॉक ऑफ फाइनल डिविडेंड. पहले हमने इंटरिम डिविडेंड पढ़ लिया, अब ये फाइनल डिविडेंड. Where the bankruptcy trustee has realized the entire estate of the bankrupt or so much of it as could be realized in the opinion of the bankruptcy trustee, he shall give notice of his intention to declare a final dividend or that no dividend or further dividend shall be declared. The notice under subsection 1 shall contain such particulars as may be prescribed and shall require all claims against the estate of the bankrupt to be established by a final date specified in the notice. इसके लिए आपका पास रूल 13 है, तो एक बार रूल 13 भी देख लेते हैं कि रूल 13 क्या कहता है. ये हमारे रूल्स हैं. रूल, ये रूल नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर, है ना. जी सर. रूल 13, notice of dividend. The notice of dividend as per clause A of subsection 1 of section 176 shall contain the following: date on which the dividend is proposed, list of creditors who shall be entitled, amount of dividend, ठीक है, request for any details required from the creditors for the distribution of dividend and the last date for receipt of such information. तो ये सारी चीज. The notice of dividend under subsection 1 of section 76 shall be sent 30 days prior to the date specified for the distribution of dividend. ठीक है, अगर कोई ये भी स्टेटमेंट जाएगी भाई नो फर्दर डिविडेंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें रीजंस देने पड़ेंगे. ये
176 पर आ गए हम दोबारा। The adjudicating authority may, on the application of any person interested in the administration of the estate of the bankrupt, postpone the final date referred to in subsection 2. ठीक है। After the final date referred to in subsection 2, the bankruptcy trustee shall defray any outstanding expenses of the bankruptcy out of the estate of the bankrupt. ठीक है। And if he intends to declare a final dividend, declare and distribute that dividend among the creditors who has proved their debt without regard to the claims of any other persons. If a surplus remains after payment in full with interest to all the creditors of the bankrupt and the payment of the expenses, the bankrupt shall be entitled to the surplus. Where a bankruptcy order has been passed in respect of one partner in a firm, a creditor to whom the bankrupt is indebted jointly with the other partners in the firm or any of them shall not receive any dividend out of the separate property of the bankrupt until all the separate creditors have received the full amount of their respective debts. Basically क्या है कि bankruptcy order पास हो गया, ठीक है, in respect of one partner, because in case of firm you can initiate this bankruptcy against a partner also, ठीक है ना। A creditor to whom the bankrupt is indebted jointly with other partners, ठीक है, वो जो creditor है उसका joint debt है, ठीक है, और any of them shall not receive any dividend out of the separate property of the bankrupt until all the separate creditors have received the full amount of their respect. मतलब अगर एक पार्टनर है, पार्टनर में क्या है, अगर कोई उसके दो टाइप के क्रेडिटर्स हो सकते हैं। कौन कौन से क्रेडिटर? एक तो हो सकता है कि जो सिंगल क्रेडिटर हो उसी पार्टनर का, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वो जॉइंट है, तो पहले सेपरेट से सेपरेट फिर जॉइंट से जॉइंट, ये मतलब है इसका, ठीक है। क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स, ए क्रेडिटर हु हैज नॉट प्रूव्ड हिज डेट before the declaration of any dividend is not entitled to disturb by reason that he has not participated in it, ठीक है, the distribution of that dividend or any other dividend declared before his debt was proved, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड 4 बार डिक्लेयर हुए, ठीक है, उस टाइम तक उसने अपना डेट प्रूव नहीं किया था तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन जब अगले वाला प्रसाद मिलेगा तो पहले उसको मिलेगा। मतलब ये when he has proved the debt, he shall be entitled to be paid any dividend or dividends which he has failed to receive. बाकियों को दो दो लड्डू पहले मिल चुके, इसको कुछ नहीं मिला, ये बाद में आया, इसको पहले दो लड्डू इसको दिए जाएंगे, बाद में दूसरों को देंगे। मतलब ये which he has failed to receive out of any money for the time being available for the payment of any further, and any dividend or dividends payable to him shall be paid before that money is applied to the payment of any such further, ठीक है। नो एक्शन shall lie against the bankruptcy trustee for a dividend, but if the bankruptcy trustee refuses to pay a dividend payable under subsection 1, ठीक है, अगर मान लो ये कुछ पार्टीजन मैनर में एक्ट करता है बैंक्रप्सी ट्रस्टी, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ऑर्डर हिम टू पे द डिविडेंड एंड पे आउट ऑफ हिज ओन मनी, अपनी जेब से दे, इंटरेस्ट ऑन द डिविडेंड एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन विच द ऑर्डर टू पे हैज बीन मेड, ठीक। सेक्शन 178 प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स। ये प्रायोरिटी कैसी है? प्रायोरिटी मोटा मोटा वैसी है जैसी सेक्शन 53 में है। क्या बोलता है? Notwithstanding anything to the contrary contained in any law enacted by the parliament or the state legislature in distribution of dividend, पहले cost and expenses incurred by the bankruptcy trustee for the bankruptcy process in full, ठीक है। अगर यहीं पर ही पैसे पूरे हो गए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सब घर जाओ अपने, ठीक है। मान लीजिए टोटल रियलाइजेशन ही 10 लाख का है और 10 लाख ही इसकी फीस है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और इसके बाद बच जाए तो सेकंड वालों को मिलेगा। सेकंड में क्या है? वर्कमैन ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। वर्कमैन कौन है? डिफाइंड है सेक्शन 3 सबसेक्शन 36 या 37 में डिफाइंड है ना, है ना। वो फिर आपको ले जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में।
सेक्शन 3 सबसेक्शन 36 वो फिर कहता है कि आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट देख लो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कहता है कि जो एयरफोर्स है, आर्मी है या नेवी है या एम्प्लॉय ऑफ प्रिजन है या पुलिस है, वो सब वर्कमैन में नहीं है। ठीक है, तो ये वर्कमैन की ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 मंथ्स एंड डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, और हमने ये भी देख लिया था कि जो फ्यूनरल है, जो टेस्टामेंट्री एक्सपेंसेस है, उसको कहां पर देना है, सिक्योर्ड क्रेडिटर मानना है उसको, है ना, वो भी यहीं पर ही आ जाएगा अगर बैंकरप्ट की डेथ हो गई है तो। Thirdly, wages and any unpaid dues to employees other than workmen of the bankrupt for the period of 12 months. इसमें ये ध्यान देखने वाली बात है, 53 में भी सेम ही है। 53 और इसमें क्या है, वर्कमैन का अगर 24 मंथ्स का है तो वो तो ऊपर आ गया। अब सपोज वर्कमैन के 60 मंथ्स के ड्यू है, ऐसा नहीं कि बाकी वाले थर्ड में आ जाएंगे, यहाँ नहीं आएंगे वो फिर रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में आएंगे। यहाँ पर अदर देन वर्कमैन ही आएगा। ठीक है, और अदर देन वर्कमैन का कितना है, फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फोर्थली, अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, यहां पर ये आ गया फोर्थ में। और लास्टली ऑल अदर डेट्स एंड ड्यूज। अब 53 में क्या होता था, 53 में यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में वो पेरी पैसू आता था ना 53 में। अनसिक्योर्ड। हाँ, यहाँ पर वो नहीं है। लास्टली में जो है ऑल अदर डेट्स एंड ड्यूज ओड बाय द बैंकरप्ट इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड डेट, तो अनसिक्योर्ड डेट नीचे आ गया। ये थोड़ा सा फर्क है। द डेट्स इन ईच क्लास स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 shall rank in the order mentioned in that subsection, but debts of the same class shall rank equally amongst themselves and shall be paid in full unless the estate of the bankrupt is insufficient to meet them। ठीक, मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बचे ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ड्यूज मिला करके मान लीजिए टोटल 100 लाख है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 50 लाख है, स्टेट गवर्नमेंट के 50 लाख है, पर बचता है सिर्फ 20 लाख रुपए यहाँ, तो दोनों को 10-10 दे देंगे। ये पर्पज, ये मतलब। Where any creditor has given any indemnity or has made any payment of monies by virtue of which any asset of the bankrupt has been recovered, protected or preserved, the adjudicating authority may make such order as it thinks just with respect to the distribution of such asset with a view to giving that creditor an advantage over other creditors in consideration of the risks taken by him in so doing। ठीक है, क्या मतलब है, मतलब बैंकरप्ट की कोई प्रॉपर्टी थी, उसको रिकवर करने में इस आदमी ने हेल्प की, इस क्रेडिटर ने, या इसने कोई एडवांस दे दिया, क्योंकि उस टाइम पैसे ही नहीं थे। ठीक है ना भाई, पैसे तो तब आएंगे ना जब ये पैसा सारा होगा। तो अगर ऐसा कोई क्रेडिटर है जिसने कोई इंडेमनिटी दी है या जिसने कोई पेमेंट की है विच हैज हेल्प्ड इन रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बैंकरप्ट, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग इसकी प्रायोरिटी चेंज कर सकती है। ठीक है, ये नाउ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये शैल बैंक। प्रायोरिटी, ये जो प्रायोरिटी वाली बात हो रही है अभी जो पॉइंट नंबर 3 में, ये हाँ, प्रीवियस एप्लीकेशन से होती है कि मैं, मेरे को आप प्रायोरिटी चेंज करोगे तो ही मैं इंडेमनिटी दूंगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ तो बात ही नहीं है ना। वो तो ऐसा है ना, जब ये तो जब प्रसाद बिकने की बटने की बात आएगी तभी तो हो सकता है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो देयर इंडेमनिटी दे देगा, उसके बाद ही वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर अप्लाई। मान लो कुछ कुछ पैसे बचे ही नहीं, मान लो, देखो ऐसा है, इसको बैंक्रप्सी प्रोसेस कॉस्ट से पहले तो नहीं दे सकते ना। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, तो बस वही है, मान लो वहीं पर ही खत्म हो गया तो खत्म बस। नहीं उसके भाई जैसे, इसने तो रिस्क लिया ना, तो इस रिस्क के बदले में उसको कुछ रिवार्ड देना चाहते हैं बस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब यही है। बट ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो नेगोशिएट कर सकता है क्या उसी पॉइंट पे नहीं, कि बात पहले। देखो, बात एक बात और भी है। रिस्क लेना पड़ेगा सर उसको। हाँ, एक बात और भी है, क्या लिखता है, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच एसेट। मेन बात ये है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच एसेट का मतलब आप कई मान सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच एसेट में ये भी मान सकते हो इन काइंड है, अगर इन काइंड है तो उसको पहले प्रेफरेंस देंगे कि उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। So supposing we can take an example, supposing there is a unsecured creditor। यस। अब उसको पता है कि मेरे को कुछ नहीं मिलना है, पर उसको हाँ पता है कि अगर मैं ये तबेला खाली करवा दूंगा उससे, हाँ, गुंडे से, तो बिल्कुल मैं कुछ बिल्कुल। कुछ हजार रुपया खर्च के वो अपना हाँ, सिक्योर्ड राइट बना सकता बिल्कुल हूँ, तो बिल्कुल उसमें वो चांस ले सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। दैट इज द थिंग। अब ये इसमें जो वर्ड है ना, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच क्योंकि एसेट। हाँ,
क्योंकि वो asset- डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच एसेट की बात हुई, पेमेंट की बात नहीं हुई यहाँ पर। हाँ, मतलब कैश नहीं मिलेगा, मतलब हाँ एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में ऑप्शन है करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओह, दैट इज अ पॉइंट। हम्म, ये है ना भाई, कंसिडरेशन क्या है उसकी, रिस्क है, और उसको मिल क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में उसको प्रायोरिटी मिल रही है। ओके। Unsecured creditors shall rank equally amongst themselves unless contractually agreed to the contrary by such creditors। ठीक है, अनसिक्योर्ड लास्ट में आ रहे हैं आपके यहाँ पर, ई पॉइंट में आ रहे हैं, तो दे शैल रैंक इक्वली अमंग्स देमसेल्व्स अनलेस कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड टू द कॉन्ट्ररी बाय सच। अगर आप आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो अलग बात है। एनी सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर द पेमेंट ऑफ द डेट्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अप्लाइड इन पेइंग इंटरेस्ट। पहले प्रिंसिपल का पेमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा ऑन दोज डेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड्स ड्यूरिंग व्हिच दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग सिंस द बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट। क्योंकि बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट तक का तो उनका क्लेम आ चुका, ठीक है ना, वो तो डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आ चुका। अब बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट के बाद वाला जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, हाँ जी, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। राइट। तो उसमें क्या होगा, ये वो सबको सबको हाँ बराबर बटेगा, पहले ये वाला बांट देंगे, उसके बाद बचेगा सरप्लस तो फिर उसमें से ये इंटरेस्ट मिलेगा। सबको बराबर बटेगा हाँ अगर और किसी का ये इंटरेस्ट पेबल है तो। हाँ अगर ये इंटरेस्ट जो पेमेंट्स हैं ये इक्वली होंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द रेट, ठीक है देन ना। सर, मतलब क्वेश्चन इज कि माई कॉन्ट्रैक्ट इज टू रिकवर इंटरेस्ट। अब किसी का पैसा वैसे ही पड़ा हुआ, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ वो तो है ही वो तो है ही। भाई, अगर आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट की पेमेंट ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई फिर बात तो। ही खत्म हो गई। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट में मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई वो डिस्टिंक्शन नहीं होगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। सब को बटेगा। In case of partners, the partnership property shall be applicable in the first instance in payment of the partnership debts। ठीक है, तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पार्टनरशिप डेट्स के ऊपर अप्लाई की जाएगी, और जो सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर इट शैल बी एप्लीकेबल इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन पेमेंट ऑफ सेपरेट डेट्स सेपरेट डेट्स। वेयर देयर इज अ सरप्लस ऑफ द सेपरेट प्रॉपर्टी। अगर सेपरेट प्रॉपर्टी में कोई सरप्लस बच गया तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगी, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर कोई पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का सरप्लस है तो वो फिर जो रिस्पेक्टिव शेयर है उसमें बढ़ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ ये कहानी खत्म हो गई। अब इस कहानी खत्म होने मैं एक चीज और दिखा देता हूँ बिफोर वी एंड दिस सेशन। इसमें ना हमने Sir, what इलस्ट्रेशन is the separate debt, sir? है, In section Separate- 7, actually there may be actually the partner might have contracted some personal debts also ना, अच्छा, और okay. कुछ पार्टनरशिप के भी हो सकते हैं डेट। भाई कुछ डेट उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी भी हो सकते हैं ना, और कुछ Okay, हो okay. सकते उसके पार्टनरशिप डेट। तो उसकी बात कर रहा हूँ जस्ट। अच्छा, this question was given when I have attempted, sir. हाँ हाँ Section subsection 7. हाँ, ये जो है ये मैं दिखाता हूँ आपको। Partners, the Yes, partnership it is. property shall be applicable in the first instance in It is. payment of partnership debts. And the separate property on each partner तो shall be इसमें हमने applicable पता in क्या the किया, first ये जो instance. केस स्टडी है ना, ये एक मिनट नजर नहीं आ रहा होगा मुझे। I think the direct question he has given, I think. हाँ हाँ मैं अभी बताता हूँ। Yes. ये कंपाइलेशन है केस स्टडी का, और ये एंड से शुरू कर दिया मैंने। ये जो इलस्ट्रेशन थी ना, ये जो सेक्शन थे थोड़े मुश्किल लगे होंगे आपको, 158 वगैरह वाले, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन बना दी है, ओके। इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन सेक्शन 158 टू 163। इसमें Okay. हर एक सेक्शन को भी बताया और उसकी इलस्ट्रेशन है। तो ये हमारा जो आपने कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज दिया ना मैंने आपको, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी वाला, जो आपने बाद में भेजा है। हाँ ये Okay. उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो कल इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बारी, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे ग्रुप पे अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है जी। Okay. Okay. तो ये है, इसमें पूरी इलस्ट्रेशन दे रखी है मैंने कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि कई चीजें नहीं समझ में आती ना, एक एक सेक्शन को लिया फिर उस पर इलस्ट्रेशन दी, Okay. Okay, okay, good, sir. है ना। हाँ सर, आपने एक आज मटेरियल इशू शेयर किया है ऑन दिस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड बैंक्रप्सी हाँ प्रोसेस। हाँ हाँ वो उसका
कुछ एक उस पर हाँ, राइट्स विनोद भी लिखे, कोठारी वाला, हाँ कुठारी वाले, हाँ जी। हाँ, ऐसा ही कोई मटेरियल आपने उस पे भी शेयर किया सर, CIRP पे? वो भी देख लूंगा, ग्रुप पे लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। हाँ जी। अब ये भी क्वेश्चन 78 178 जो श्याम कृष्ण जी आप बोल रहे थे ना, ये वो हाँ है। सर। इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बना दिया है ना। तो प्लीज गो थ्रू इट एंड देन वी विल डिस्कस दिस थिंग, ओके 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 है सर। ना। तो ये पर्टिकुलरली ये वाला पॉइंट, ये जो है ना, ये जरूर देख लीजिएगा, ये वाली इलस्ट्रेशन। सर एक क्वेश्चन है, अगर 2 मिनट और ले सकता हूँ हाँ तो। हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं, जितना मर्जी टाइम लीजिए, ये है। हाँ जी। सर बैंकरप्सी ट्रस्टी में हमें उसको बैंकरप्सी को क्लेम्स लेने होते हैं, विच इज डे इज गिवन 14 डेज में उसको लिस्ट ऑफ क्लेम बनाने लेनी है। ठीक है, उसके बाद वो टाइम टू टाइम मॉडिफाई एंड अपडेट भी हो सकती है, जिनके ठीक है, क्लेम नहीं आए बाद में वो क्लेम देते रह ठीक है, सकते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट टू रिसीविंग द क्लेम्स कुछ है इसमें सर? जैसे उसमें तो लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर क्लेम नहीं आए तो उसके बाद आप क्लेम नहीं ले सकते, अरे उसमें नहीं, इसमें तो ड्यूटी। बाद में फिर प्रूफ के लिए अलग से बोल रहा है ना वो। अप्रूव वो भी 14 डेज और बोल रहा है सर। हाँ। टी प्लस 14 तो हम्म। 28 डेज तक आपके क्लेम जा सकते हैं। हाँ, क्या उसके बाद भी आ 71। सकते हैं? देयर इज समवेयर इट्स रिटर्न, लेट मी चेक, कि जिन्होंने क्लेम नहीं दिए वो फाइनल डेट पे भी क्लेम दे सकते हैं बिफोर डिक्लेयरिंग द फाइनल डिविडेंड। 117 देख लेते हैं सर एक बार इसमें, हाँ जी, सेक्शन 117। 170 11, नो सॉरी, या 117? 171 171 तो प्रूफ ऑफ डेट है। प्रूफ ऑफ डेट है ना, तो उसमें क्लेम्स 177 है सर, क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ हाँ। A creditor who has not proved his debts before the declaration of नहीं, any इसका dividend मतलब is पता not क्या है, declared। इसका हाँ मतलब जी, कुछ और है जी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 4 बार डिविडेंड डिक्लेयर हुए, जैसे मैंने बताया ना आपको, वो जी जी पहले जी। डिविडेंड के टाइम तक उसने क्लेम प्रूव नहीं किया था, बाद में हम्म, उसने क्लेम प्रूव किया। क्योंकि देखो, इससे पहले वो क्या कह रहा है कि प्रोविजन रखता है, वो रखता है ना प्रोविजन। जी जी जब हमने प्रोविजन की बात की कि भाई कुछ ऐसे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिस्टेंस कुड नॉट प्रूव देयर क्लेम, ये हमने पढ़ा था ना। जी जी जी। 178। ये 174, 174 में एनी बैंक्रप्सी डेट व्हिच अपीयर टू हिम टू बी ड्यू टू पर्सन्स हु बाय रीजन ऑफ राइट द डिस्टेंस ऑफ देयर राइट प्लेस ऑफ रेजिडेंस राइट राइट। मे नॉट हैव हैड सफिशिएंट टाइम, ठीक है ना। तो उसके लिए उसने प्रोविजन रखा हुआ है, पहले वो क्लेम नहीं कर पाया, बाद में क्लेम कर लेगा। कई चीजें इसमें ना, वो पूरा तो हर एक जगह पर टाइमलाइन नहीं दी हुई है, बहुत सारे प्रोसेस। अगर कोई दिक्कत होगी तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, और क्या। ठीक है सर। ये सर ये फाइल का नाम एक बार और बताएंगे, जो अभी आपने दिखा रहे थे वो केसेस के एग्जांपल जो दिए मैनुअली, हाँ हाँ। हुए। फाइल का नेम जो आपका भेजा हुआ है उसका। हाँ, मैं दोबारा भेज दूंगा, 1 मिनट में दिखा देता हूँ अभी जी आपको। सर, नेम दे दीजिए, सेव कर रखा है वो। हाँ डेटा इतना लिस्ट पड़ा हो गया ना। हाँ, ये है, ये कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज, कंपाइलेशन ऑफ केस स्टडीज ऑन इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अपडेटेड। ओके, अपडेटेड, ठीक, पावर पॉइंट है ये, अच्छा। हाँ, पावर पॉइंट, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है हाँ, सर। ये 131 पेजेस की फाइल है। 131 पेजेस। Sir, a small clarification, sir. यस प्लीज। Actually, the 153, हम्म। the items which requires the approval of creditors, हाँ, it is more than 50% is enough, because regulation 25, 4 is talking about this. 1 मिनट अभी देख लेते हैं रेगुलेशन। 25, voting by the committee. या एक, मोर देन 50% सेल्स। हाँ, Actually, अगर लिखा है तो ठीक है। yes, yes, वहां sir. तो वहां मोर देन 21 लिखा था ना। More than 50, at least 51. हाँ, 25 में क्या लिखा है, कहाँ लिखा है? 4, sir, 4. Unless otherwise provided in the code, any हाँ, decision of the committee मोर shall देन 50, require हाँ ठीक है, approval of more than 50. राइट, ठीक है। तो यहाँ मोर देन 50 है तो मोर देन 50 ले लेंगे, वहां मोर देन 50, वहां नॉट लेस देन 51 लिखा था, तो वहां Yeah, वैसा लेंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। बट इसमें भी देखो, मोर देन 50 लिखा है, मोर देन मोर 50 देन, का मतलब एग्जैक्ट 50 पे नहीं होगा। मोर देन 50 है। yeah, maybe 50.5, हाँ, 50.1. बस बस वो इतना ही आप आर्गू कर सकते हो।
कि Correct. मोर देन 50 का मतलब ये है कि 50.1 हो गया तो आप कह सकते हो ठीक है। वहां नहीं कह सकते, वहां लिखते हैं नॉट लेस देन 51। Dot 51 should be there. है। The 51 should be there. हाँ बस बस वही। यहाँ भी मोर देन 50 बोला उसने, तो मतलब उसका वही है। वैसे राउंडिंग ऑफ तो अलाउड है नहीं यहाँ पर, यहाँ राउंडिंग ऑफ का कोई प्रोविजन नहीं है कहीं पर भी। Sir, a small request, sir. I skipped, I think, one point. यस। This 178 debt owed to secured creditors. हाँ हाँ। What is this, sir? Actually, he has to either he has to relinquish or he has to enforce separately, no? Actually, here it will come only when he has relinquished. Otherwise, so he will rely on his own now, and for the balance he will prove here. भाई in case of liquidation also same thing happens. Liquidation में क्या होता है? Liquidation में भी तो ये होता है भाई, now the secured creditor has got the power during bankruptcy to realize the asset on his own. Correct. Now if he has realized the asset on his own, for the balance only he will prove his claim. अभी पढ़ा तो था हमने, कोई section भी No, था। in the 53, actually, he will come only on par with the central government dues. But here he is coming to Yes. itself. Here it is coming at the last. All other debts and dues. Actually, there in the 53, as they have clearly written, debts owed to secured creditors who relinquished their security interest. हाँ यहाँ पर But ऐसा। here, but here they have not written. Yes, that is the difference. Now that is the difference between 53 and 178. So in 178 there is no such thing. Either is secured creditors. So debts owed to secured creditors. So basically, in 53 they are making a distinction between two types of secured creditors. One, those who have relinquished their security interest. They are, यहाँ पर क्या है, debts owed to secured creditor, सारे ऊपर ही आ गए। आप ऐसा समझ लीजिए, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसका कोई भी डेट बाकी है, ठीक है ना, तो वो ऊपर ही आ अच्छा, जाए। दो देयर इज नो प्रायोरिटी फॉर दोज हु रिलिंक्विश, ऐसा समझ लीजिए आप, oh, okay, है ना। okay, sir. हाँ ये मतलब है इसका। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट, ये भी अच्छा पॉइंट है। आई विल इंक्लूड इट इन केस स्टडी। तो मैं क्या करता हूँ, वो केस स्टडी में डाल देता हूँ जैसे पॉइंट्स ना, तो उससे और क्लैरिटी फिर दूसरों को भी हो जाती Actually, if you have time, one more question I can ask you, sir. है। यस यस, Small प्लीज question, प्लीज very आस्क, नो small. नो इश्यूज। यस यस। Actually, in liquidation 31A6, liquidation लिक्विडेशन, regulations अच्छा 31A6, सेक्शन कौन सा है आपका? not sections, sir, liquidation regulations. ओके ओके, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। 31A6 is talking about meeting within 7 days of liquidation commencement date. The first meeting of the creditors. Yes, yes, yes. Stakeholders consultation committee, you mean to say? Yes, sir. Yes, sir. Stakeholders consultation committee. Yes, yes, yes. But the constitution of the committee within 60 days That is to be done LCD. within 60 days. But till that time, the COC, which was there during CIRP, that will act as stakeholders consultation committee. That is also written, no? Well, that is written there in the regulations. Yeah, that is there, sir. That is there. तो बस फिर That is वही, there. That's right. तब तक वही, the COC will act as stakeholders consultation committee till it is constituted, and 60 days is the maximum period, minimum नहीं है, हो सकता है। No, sir. Actually, here my problem is हाँ there in CARP committee of creditors who constitutes only financial creditors. See, yes, unrelated but- financial creditors, yes. yeah, but Yes. whereas coming to this liquidation, stakeholders committee consists of all creditors, So irrespective that of. is there, but the consultation is फर्क not नहीं binding, पड़ता, ना. It is not फर्क binding नहीं on the पड़ता, liquidator. हाँ, फर्क It नहीं is हाँ, पड़ता। just to give you the reasons in writing, and in case he deviates from the opinion of the stakeholders consultation committee, he has to Okay. inform the board and the adjudicating authority. And there is a prescribed form also for that purpose. Okay, But sir. that is the only thing. So there is a difference now between their powers also. Okay, thank you, sir. Thank you. Okay जी, Thank you, sir. thank you. So you please utilize your Sunday. जो जितना भी ये केस स्टडी वाला मटेरियल दिया है मैंने, इसको जरूर एक बार देखिएगा, है ना। एंड नाउ वी आर मीटिंग ऑन Monday.